All India rank 71 in this year's Indian Forest Service exam. And that is what all about me. I have done my graduation from Mumbai itself. I am born and brought up in Mumbai. I've done my graduation in mechanical engineering, and this was my, in particular, second attempt in the Indian Forest Services, and overall third attempt at the entire augment of civil services examination. And my optionals in civil services include anthropology, and in forest services, which I cleared, it is geology and forestry. So, like the normal topper talk that we normally have, that in which I tell you what happens and what doesn't happen, I can tell you that. Just give me a second. Yes, you can ask your questions. You can make like आपको क्या पूछना, because you able to clear prelims almost every time and with very good margin, not like just clearing CSE prelims. So you can have, अगर किसी को फॉरेस्ट का टारगेट करना तो he can ask, ठीक है. Then आपको ऑप्शनल का कुछ पूछना है कि because the thing is that कि आप अगर CSE का prelims मेंस लिखने के बाद suddenly you are focusing means for how he has managed, you can ask. Okay. So we can have normal session, like every time we have a topper session in which a topper tells you what should you do and what you shouldn't do. Rather than that, having that, you can ask me questions as to what you want to ask to me. Yes, support. Apur, I'm audible. पूछना था पूछो. Yes, sir. Good evening. Yes, sir. Good evening, sir. Congratulations, sir. आप पहले Thank भी you sir so वो much. we were also in the last year, sir. You used to come in the class as well sometimes. Yes. Yes. Yes, sir. So many congratulations, sir. Sir, my optional is also same, sir, for CSE. It's anthropology. And similarly, sir, I have also taken forestry and geology in the forest as well. Sir, this time, sir, I am scoring highest 108 in the GS, but my CSAT is becoming a problem in clearing this. I don't know if because it is 57.5 I'm getting from Vision and PWIES right now. Some of the comprehensions went wrong this time, about 10 of them, and I attempted more of maths, so it is becoming a problem for me. But sir, I will be attempting, if I am able to clear this attempt, then I will be attempting a forest as well, sir, because this time it has sufficient amount of time. About 2.5 months we are getting this time, I think, after the uh, anthropology and matlab the CSE means. So, sir, I wanted to get a strategy of how to utilize this time for anthropology and then after for forestry, sir. Forestry and So, geology. see, Yes, sir. in particularly about anthropology, see, I would not be the best guy to tell you what should you follow in the case of anthropology, because I have myself Yes, not went through that. But if you would ask me about the Indian Forest Services, so I can tell you, normally 80% of the crowd that clears Indian Forest Service are the guys who have sat in the civil services mains and have read for like 1.5 months. We normally get 50-55 days for this forest services every year till now. But this year they have shifted the mains to some prior date, so we have much more time as compared to previous years. So what you can do is, what which attempt is this of yours? sir, this is my third attempt, sir. This is your third I attempt. Okay, and I graduated previously in have 2023. Yes, sir. In okay. 2023, I graduated, and just after my graduation, I gave my first attempt in 2023 itself. And then last year, I gave after 1 year of preparation, and this year also I gave. Yes, sir. So it is my third attempt. But I was not able to clear last year, sir. Last year, I got about 76 marks in GS and 85 in CSAT. 76 marks in GS and 85 in CSAT. So I was not able to clear. Okay, understood.
So what you can do is, if you ask me personally, if you are, मतलब अंदर से you would get आवाज, अंदर से you would know कि यार मैं civil services appear करूंगा तो would I be able to clear it? Is my main strong enough कि if I go through with it, would I be able to clear? See, there is always two hard choices to make. One is if I appear for civil services as well as forest services, there is some chances that I could flunk in forest domains. But when you leave civil services and only study for forest services for 4 months, you are almost guaranteed to clear mains. Almost. Matlab, the chances go as high as 90% because if you understand that people who are studying for 1.5 months are able to clear with two new optionals. So if you are reading for Yes, 4 or 5 months, you will be able to clear. yes, At sir. the end of the day, you have to take the call ki, whether I have to skip civil services means or should I set for civil services means as well as forest services. And this time there is an ample amount of time. Last time I had 55 days, 55 days, 50 days in particular to Mhm. study for forest services. So I was able to do. Now you're telling me there are it is like 2.5 months approximately. So that is doable. Yes, sir. Sir, sir, if I am not able to clear this time, then also, sir, I'm thinking of studying because I think I'll have ample time. So I will be studying forestry and geology as well, I'm thinking. What would you So suggest, sir, regarding this? you would study three optionals. Um, yes, sir, I would. Matlab, what is your opinion on this, sir? Should I, matlab, just brush it up a bit, like forestry and geology, See, or personally speaking, you need not to do anything like that. Those are not as big a optionals as you are thinking. CSE is optional and forest services optional are two very different game thing. In CSE, you need to go to a level, almost in subtopics, you need to go to a level which is PhD level. But in forest yes, services, sir. it is normally BSc or BTech level thing. So, the two most famous optionals are forestry and geology. So forestry you can complete in 20-25 days and 30 days are required for geology. So I don't think you should be sitting with all the three optionals and studying. If you clear, well, 3 months are more than enough. Sure. Yes, sir. Sir, and sources, sir, what would be best for us, sir, to follow for these forestry and geology? In geology, in forestry, I took this Hornbill. There is a class called as Hornbill. Yes, sir, I So, seen, sir. I saw it. I saw the lectures of their classes and coaching, and then after there is a book called as Manikandan for forestry. Mm. So, if you are able to complete their classes and read Manikandan, or complete their classes and read their notes, it is more than enough. And for geology in particular, I took planet geology. There is a class called as planet geology. Yes, sir. So if you take, matlab, I personally took because geology, there is a problem with geology. Geology is a very scientific subject. If you don't understand, you would not be able to mug it up. At least in my Mm. case, I figured it out that it is so scientific that if you are not able to understand, you would not be able to mug it up. So what I decided is I took the class planet geology. There are two guys, Mayank sir and Lawrence sir. You can like they are very good at it. So I took their class, and there's a topper of 2023, or two, I guess, 2022, Mr. Apurva Dikshit. Good, sir. Mm. Yes, sir, I heard him. I read his notes. His notes is more than enough. If we are able to do his notes, it is more than enough. I did nothing other than that. So planet geology lecture just to understand the technical aspects of geology, and Apurva Dikshit's notes to mug it up. Okay, yes, sir. Sir, these many lectures, is it, matlab, how many lectures would be there, sir, in this planet geology? Is it a live class or did you see the recording? See, there is a mix of both. It is also some classes are live and some classes are recording, and you need to be smart at that point of time. You cannot matlab, like Mm-hmm. see every Understood. lecture in every class. So you need to be smart enough in that aspect. For example, there is a topic called as stratigraphy. So stratigraphy is a very technical aspect. Matlab,
a very technical thing, and plus there is nothing to understand. You have to just mug it up. So, and you need not to watch those 20 lectures. You can skip that. And then the part one of geology, part one, paper one, part one. So in that you have the topics common with geography, GS paper one. So you can cover it from there. Sure, sir. So Sir, and so in the yes, sir. yeah, go ahead, go ahead. Sir, I was asking regarding GS also, sir, because in civil services, what we study in 4 papers, it is asked in 1 paper, I think, in the Yes, forest exam. Yes, sir. So I think, yes. sir, that would be easier part for us to complete. Yeah, yeah. Yeah. Actually, it is very easy. If you have ever studied for civil services, even for once in your life, you would be able to answer the forest services GS paper because it is very easy. It is very easy, Mhm. very straightforward. For example, if you ask me, then one of the questions that could be what are the roles and the challenges of the office of the governor? So this is the easiest topic that you can do. What is basic Mm. structure doctrine, and then how do you Sure, sir. calculate GDP? And so the entire paper is divided into sections. Part one, part two, part three, part four, and every part has four questions. Normally, the trend is they have Okay. 4 to 6 questions. So there are Mm. 4 to 6 questions on polity, 4 to 6 questions on economy, 4 to 6 questions on history, 4 to 6 questions on science and tech. Yes, sir. And So sir, you'll be able to do it. is there a different strategy that you applied over there for answer writing in these paper? Because I heard someone like uh, who was telling me that she wrote she used different pen, for example, which we generally don't use in our civil services examination because of the time paucity. But some of the selected people they were telling ki they use different kinds of pen because over there the presentation is more accounted for in this forest service papers while checking. Yeah, that is true. That is true to some extent. I mean, I've seen people using crayons to color their graphs and diagrams, so that is true. I personally never was able to do it because the amount of time that I had upon myself to read and then memorize. So I thought ki if I'm not have not practiced anything in the usual practice sessions of mine, I would not like experiment it directly in the exams. So I didn't do it, but people do it, and it is a very famous practice in forest services. Because see, you your in civil services the Mhm. optional papers are of 250 and 250 marks, Yes, sir. whereas in forest services it is 200 and 200 marks. So you get the same Okay. amount of time, 3 hours, for writing a 200 marks paper. Yes, sir. So you have a lot of time on your disposal to use do such kinds of creativity in the exam itself. Yes, sir. Sir, and the structure of the answer and everything, you derived it from the civil services, what we do in the preparation, that only, or did you experiment something different in that, in optional or in GS over there? See, the entire forest paper includes 6 papers, 4 of optionals, 1 of GS, and one Yes, of sir. English. English. Yes. So, the amount of stress that we put on the structure of an answer and the aspect of an answer is lower down or is a little dissolved in case of forestry because the optional papers have a higher weightage. Mhm. Yes, In sir. civil services, we have 4 GS paper and 2 optional papers, and most of the time, people taking optionals in CSE are normally those of humanities. So Yes, sir. their structures, there the weightage of structure is very high. But when you come down to forest services, there you have 4 optional papers, of which all of 4 of them are technical. Forestry is a technical subject, geology is a scientific and a technical subject, so all of them are technical and scientific. Yes, structures do matter. I'm not telling you structure doesn't matter. Structure does matter. Structure is an important aspect of the answer, but we do not put so much emphasis on structure in comparison to civil services. But yes, structure is important. Yes, sir. And sir, last year, sir, what changes did you find? Like last year also you gave forest, and this year also you gave forest. So what improvement do you think you made so that this year you are able to score more and get See, last selected? year, what happened with me was last year I was on the margin of every paper.
So in every paper, I was just grazing around to get enough marks to clear. So my sum aggregate did not come out to my final total was not enough to go into the finalist. But this time I decided कि yes, ठीक है. Now I know the subject. Now I know what is important. Now I know how the exam works. So I decided to put a little more emphasis on my optional such as geology. So I got 241 marks in geology. So that was the game changer for me. Sure, sir. Sir, and regarding the interview in this forest services, sir, I've seen ki people are getting more marks than the ones that they get in the civil services interviews. And regarding that, sir, can you tell about that perspective as well? Ki is it how much role this interview plays in this forest? Okay. See, the most basic difference is civil services interviews of 275 marks, Indian Forest Service interviews of 300 marks. Yes, sir. First. Second, the amount of people appearing for civil services interviews is approximately 3,000, which is now these days it is 3,000. Whereas in case of forest services, it is only 350 people which are appearing for the interview. Yes, sir. Thirdly, civil services is a generalist job, whereas in the case of forest services, the job is a very scientific job. So the amount of questions that are asked to a forest service aspirants is of to a limited domain. I would not say it is restricted, but it is to a limited domain to us to check the capability of an individual to that aspect only. I mean, Sure, sir. it happens, but it is rare that they would go deeply in foreign affairs because you have nothing to do with foreign affairs in Indian forest services. Hmm. So in forest services, yes, the interview scores are a little inflated as compared to this civil services. The average score these days is 190 marks in forest. Yes, sir. Good score is 200 marks. 210 is excellent. 210 is very excellent. Anything above that is something very, very great to achieve. Sure, sir. Thank you, sir. Sir, this was the questions regarding the forest that I had. Thank you so much, sir. Even Deepak, most of the people, just everybody is not targeting forest only. So there are many people, just like many people that are targeting prelims only. So they are stuck with the prelims. Yes. Okay, okay. We can talk about prelims. Prelims is the most important aspect, and okay, we can go with prelims. So the basic thing that we can talk about prelims is the book list. So the common book list, everybody follows it. No, there is no different book anybody is reading, no different lines anybody is reading. People are reading the same content. For history, we have got Spectrum for modern. For ancient and medieval, I personally read Tamil Nadu State Book. We have Tamil Nadu State Book for ancient and medieval, part one, part two. So I read it for ancient and medieval. Then for geography, I read only NCRT. But there is also a site. But now I think they have also launched a book, PMFIS. So if you go to PMF the site, you would find the entire geography. And if you are not comfortable in geography now, I would recommend go and read PMF. It is a very good, well curated material of theirs. I don't know about the book, the current book they have, but I know about the site, PMFIS, का geology का site. Then for environment, I read Shankar, but I think the utility of Shankar is now decreasing and it is more about the applied aspects. But you should read Shankar. It gives the basic thing that is required for environment, for history, environment, geography, polity. We have to read Lakshmikant, no doubt about it. And so which subjects are left? I think for economy, I personally read Mr. There is a professor called as Mrunal Patel. So I read his notes. So for economy, I read his notes, and I don't think I'm missing any of the other subjects. Art and culture, we have got Nitin Singhania. So I read Nitin Singhania, but we have to read very selectively of chapters that are like very, very common. For example, the first chapter, art and architecture. Then we have got paintings. You should know which dance form is from which state and what is very prominent in it. Then there is a
in new editions of this Nitin Singhane, there are chapters called as coinage, science and tech, and pillars and inscriptions. So you can read all these chapters. These are very important. So these are the common things that that everybody does. I also did it, but I understood something. Ki nobody is talking about it. I thought when I would pass, I would tell you ki you have to read every book 25 to 30 times. So if you are complaining by after reading 3 to 4 times, तुमने polity 3-4 बार पढ़ा, you have read polity Lakshmikant for 3 to 4 times, and you are telling me that you are not able to remember anything. You are not supposed to remember anything by reading 3 to 4 times. In any attempt, any topper who has cleared this exam would tell you he would have read at least 30 times or 40, 30, 35 times. 25 is the least amount of time people would have read the book. I would say I personally would have read it like in my in all of the attempts. If I do aggregate, I would have read the book for 50 times, at least 50 times. And you have to go line by line. Matlab, for the first time when you read the book, you have to be very diligent, very slow, and very careful in reading the books. And one of the best way of finding out if you're reading the book correctly or not. For example, if you're reading Lakshmikant, you read it, and second time when you read Lakshmikant, na, you read a line and you thought कि यार ये तो मैंने कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं था. I have read Lakshmikant. मैंने तो ये लाइन कभी देखी नहीं अपनी जिंदगी में. मतलब मैंने क्या पढ़ाई किया. फिर then you would understand कि okay, so when you read it for the second time, you find new things. So this is how you read a book. For current affair aspect, the standard vision material PT 365 is what I referred. Don't run behind material. Material is like not important. Trust me. I have myself heard this line, and now I am myself telling you material is not important. Every material is the same. They have same content. सिर्फ थोड़ा यहाँ वहाँ is and the को इन्होंने हिलाया होगा. मतलब somebody is riding is आगे, somebody is riding the पीछे. Nothing more than that. So in particular, if you want to ask about prelims, you can ask. सर हेलो. हाँ सर मैं एकदम बिगिनर हूँ प्रिपरेशन में और बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है प्रिपरेशन का. तो कुछ टाइम पहले मैं चालू करा था ये सब. तो जैसे आप पॉलिटिक्स एग्जांपल दे रहे थे कि 25-30 और पढ़ना है उसको ऐसे करके, ठीक है. तो उसके बाद सर आप कुछ उसको बनाते हो कि नोट्स की 25 तरफ पढ़ने के बाद जरूरत नहीं पड़ती नोट्स की? मेरे हिसाब से मतलब मैं अगर सच कहूँ तो मैंने पॉलिटी स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम या एंशियंट मिडिवल इनका कभी नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने वही मार्क कर लिया था, वही अंडरलाइन कर लिया था या वही लिख लिया था कि ये इंपॉर्टेंट है. तो जब मैं दोबारा पढ़ता था या तो वो हाईलाइट वाली चीज, अंडरलाइन वाली चीज मेरे काम आ जाती थी. एंड सेम बुक को आप जब प्रीलिम्स के नजरिए से पढ़ते हैं तो वो बुक को आप एक अलग तरीके से पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू जब आप सेम बुक को मेंस के नजरिए से पढ़ते हैं. तो इन पर्टिकुलर केस ऑफ प्रीलिम्स आप कितनी चीजों का नोट्स बनाएंगे. तो मैं अवॉइड करता था, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए हैं प्रीलिम्स के लिए किसी भी टॉपिक का. हाँ, मैंने बुक में ही हाईलाइट किया है, मैंने बुक में ही अंडरलाइन किया है, मैंने बुक में ही अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बताऊं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में ना 3 चैप्टर्स है. एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ओबीसी. तीनों का कंटेंट सेम है, 100% सेम है, सिर्फ सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है. तो मैंने क्या किया था, मैंने एनसीएससी के फर्स्ट पेज पे लिख लिया था कि क्या मेंबर्स होते. तो मुझे ये मालूम था कि ठीक है, पहले एनसीएससी जो था वो सिंगल मेंबर बॉडी था, फिर उसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और एनसीएससी और एनसीएसटी को अलग किया. फिर उसके बाद हमने उसमें क्या मेंबर्स होते हैं, उसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा 3 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक वुमन होनी चाहिए. तो ऐसा मैंने अपने एनसीएससी के फर्स्ट पेज पे लिख लिया. तो जब भी मैं एनसीएससी पढ़ने आता था तो मुझे मालूम है कि ये जो बस मैंने इतना सा लिखा है यही है पूरे बुक में. तो मैंने जब वो 10 लाइन पढ़ी तो वो एनसीएससी भी पढ़ लिया, एनसीएसटी भी पढ़ लिया और एनसीबीसी भी पढ़ लिया. मैंने तीनों चैप्टर साथ में रिवाइज कर लिए सिर्फ वो 10 लाइन पढ़ के. तो ये हमें स्मार्टली करना होता है. जैसे मैंने हर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको मैं ऐसे
कंपाइल कर सकता था मैंने कंपाइल करके रखी थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने CIC का सामने ही लिख के रखा था कि CIC क्या होता है। CIC होता है, एक CIC होता है और एक 10 और 10 से ज्यादा IC नहीं हो सकते। फिर उनको एक कोलेजियम अपॉइंट करती है, कोलेजियम का हेड कौन होता है, कोलेजियम में कौन कौन होता है, बस उतना सा लिख के रखा था। बाकी इन जनरल अगर आपने 10 बार 15 बार 20 बार बुक पढ़ी है ना तो आपको याद आ ही जाएगा वो। यस सर, एक चीज और, मैं जैसे कि अभी ना मेरे पास वो था, क्या बोलते हैं, मतलब एक फ्रेंड का मैंने मंगा था पुस्तक, वो एनवायरनमेंट वाली की, PMF IS है ना। तो उनकी सर पहले बुक वाली पतली थी और अब वो धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, बल्कि होती जा रही है वो, है ना। तो मैं उसको चालू किया पहले पेज से पढ़ना, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा सर कि कितना सारा इसमें मतलब पढ़ने का है यार, कि मैं एकदम बोर हो गया था उस पुस्तक से, पता है। सब लोग यही रिकमेंड, जैसे आपने भी बीच में मैंने सुना, बोला आपने कि हाँ शंकराचार्य जो है वो थोड़ा रिडंडेंट होता जा रहा है, लोग PMF इसका ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो मेरे को सर, मैं PMF IS ही पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि यार आई एम गेटिंग बोर टाइप का, जबकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है फॉरेस्ट के लिए। तो उसको कैसे अप्रोच करूँ सर मैं, जैसे वो तो लगभग PMF IS में 400 पेज की किताब है वो। देखो मैंने तो PMF IS पढ़ी नहीं है, पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट वाली, तो जी मुझे आइडिया ही नहीं है जी। PMF क्या मतलब कैसे वर्क करती है, या वो कितनी नहीं सर, मोटी वो है, ना या उसमें क्या उसमें बहुत करता है। बहुत अच्छे विजुअल्स हैं उसमें, मतलब जो भी कंटेंट बताया आप है बहुत अच्छे विजुअल्स का यूज किया है। लेकिन वही है दे- सर कि बल्कि लगता है बहुत, मैं पढ़ रहा था थोड़ा बोर सा लगने लग गया था मुझे। सर एक एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, या तो बोर हो जाओ या तो एग्जाम क्लियर जी कर लो। सिलेक्टिव पढ़िए जी सर। उसको। पीएमएफ बहुत, नो डाउट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सिलेक्टिव पढ़िए, विजुअल अच्छे हैं, लेकिन आप थोड़ा सिलेक्टिव जी पढ़िए, उस थीम पे जाइए आप जाकर के, साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब कवर कीजिए। एंड टू एंड मत पढ़िए किसी भी बुक जी को, बोर होंगे ही। इवन स्पेक्ट्रम को भी एंड टू एंड जी। पढ़ेंगे तो बोर होंगे ही। नहीं सर, वही मैं बताया सर, मैं आपको इसलिए शुरू में बोलने की तो मैं अभी प्रिपरेशन में, तो मेरे को वही लग रहा था हाँ कि इतना है क्या ऐसे करके। हाँ हाँ जी, ध्यान माइट रखूंगा बी सर। फॉर फर्स्ट टाइम तो बोर होना ही, फर्स्ट टाइम तो बोर होगा ही, बट लाइक सेकंड टाइम थर्ड टाइम यू एबल टू गेट इट हम्म, कि फिल्टर क्या करना है, कैसे पढ़ना, कहाँ से रिवाइज करना है, जी ठीक है। जी सर। और बोर कहानी थोड़ी जी है यार, बोर तो होगा ही ना। मतलब यस सर। कहानी थोड़ी है कि हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ रहे हो कि आपको बोर नहीं आएगा, बोर तो होगा ही। जी जी सर। Yes, the sort of H2 son UPSC is anybody if any have a doubts regarding prelims you can सर, ask. We are ये सर open for सर आप questions. IFS सर से क्लियर किए हैं सर, जनरली मैक्सिमम मार्जिन से क्लियर करते हैं सर। मेरा बस यही था कि लाइक एक और आप ही के जैसे एक और लाइक 2023 के कुणाल मिश्रा हैं, उनके IFS जो है, कुणाल तो सर। सर हाँ सर उनकी, उनने भी थोड़ी दिन पहले प्रीलिम्स के पहले उनने लिया था ये सेशन। तो उनका था कि मतलब उन्हें बोला यार मैंने कभी मतलब टेस्ट सीरीज ज़्यादा नहीं किया, मैंने PYQ से ही किया, और टेस्ट सीरीज ज़्यादा ज्वाइन नहीं किया मैंने, एक दो लगाए होंगे बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो सर टेस्ट सीरीज से क्या अप्रोच रहता है, क्योंकि सर आप लोग को रहता है मतलब हम लोग से तो CSE वाले से तो IFS वाले ज़्यादा ही मार्जिन से कवर कर मतलब प्रीलिम्स हर बार निकालते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज के क्या अप्रोच रहता है सर आपका? यार टेस्ट सीरीज का देखो, एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ क्लियरिंग एग्जाम। मैंने भी यस सर। कुणाल सर को फॉलो किया है, आई नो व्हाट ही सेज एंड ही इज अ वेरी ब्रिलियंट एट हिज वर्क, नो डाउट यस अबाउट सर। इट। एंड मतलब आई एम टेलिंग यू देयर आर different ways of clearing this exam. At Kunal sir's way is one of them. I personally, मैंने तो टेस्ट सीरीज दी थी। आई वुड नॉट टेल यू कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी। मैंने विजन की जो टेस्ट सीरीज आती है प्रॉब्लम्स की, आई कंप्लीटेड द एंटायर टेस्ट सीरीज यस सर। एंड टू एंड। मतलब ना अब मुझे टाइम, मतलब दिस अटेम्प्ट इन 2024 आई हैड नो टाइम to write the entire exam because in 2023 का जो result था that came in like in almost a month I had my paper prelims again, so I had no time to write the entire test. But in the previous attempts I used to appear the entire test, no doubt about it. So what I did was, for example, if you take I only gave vision ka test, only vision, ओके सर। because at that time when I was appearing, matlab this time 2024 maybe the utility of their paper has reduced. 2025 I don't know because I didn't write their paper. But if you go back in 2023, the relevance of their question papers was more as compared to any other paper available in the market.
एंड Yes, sir. इट इज लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम समवेयर और द अदर। या तो तुम वहां से प्रैक्टिस करोगे या तो कहीं और से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तो करना ही है पेपर का, तो कहीं से भी कर लो। तो आई डिड इट फ्रॉम दिस विजन का टेस्ट सीरीज। आई यूज टू रीड द, फॉर एग्जांपल उनका फर्स्ट टेस्ट पॉलिटी होता है, पॉलिटी के 15-20 चैप्टर का टेस्ट होता है, तो आई यूज टू रीड दोस 20 चैप्टर 20 चैप्टर्स, गो बैक राइट द टेस्ट एंड देन सी मैंने क्या गलत क्या सही किया है, गो बैक रीड दोस 20 चैप्टर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस प्रिपेयर करो, फॉर एग्जाम्पल फिर उसके बाद वो नेक्स्ट 20 चैप्टर्स का टेस्ट होगा, तो वो नेक्स्ट 20 चैप्टर्स पढ़ो, गो बैक राइट द टेस्ट, देखो क्या गलत हो रहा है, देन गो बैक रिवाइज दोस 20 चैप्टर्स एंड देन मूव वर्ल्ड। तो पार्ट पार्ट लेंथ में सिलेबस भी होता चलता है, कॉन्फिडेंस भी आता है और बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ने का स्ट्रेस नहीं आता है। एंड द अदर थिंग इज टेस्ट तुम्हें तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रक्चर कर देता है। Yes, sir. सर एक और चीज सर, जैसे कि यूपीएससी के अदर एग्जाम्स होते हैं, जैसे सर उनको प्रायोरिटी दें या फिर ये टेस्ट सीरीज को सर, जैसे सीएपीएफ का एग्जाम होता है ये सब का सर। मतलब आई तो वुड से देखो, हर एग्जाम है ना एक सेट डिफरेंट सेट ऑफ ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए बना है। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल सीएपीएफ का जो टेस्ट है वो सीएपीएफ के ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए बना है, एनडीए का टेस्ट एनडीए के ऑफिसर्स को, सीडीएस का टेस्ट सीडीएस के ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए बना है। सो आई वोंट टेल यू कि तुम दूसरे एग्जाम्स को ही चेस करने लगो कि मैं सीएपीएफ एनालाइज करूंगा और फिर सीएपीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा। हाँ, इफ यू गेट इट फ्रॉम समवेयर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मृणाल सर है, मृणाल सर वो वाले क्वेश्चंस सीएपीएफ के, सीडीएस के, एनडीए के जो सिविल सर्विसेज के लिए रेलेवेंट है, वो उनको ढूंढ के उनको सॉर्ट करके टॉपिक वाइज बाइफरकेट करके वो तो खुद ही दे देते। सो यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड ऑल दोस क्वेश्चंस Yes, sir. जो वो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट थे और तुम्हें सीएससी के लिए पता होने चाहिए। थैंक यू सर। Yes, H2O, sir. Chaudhary, you have any question you can ask? सर मेन से पूछना है, मेन से रिलेटेड। गो अहेड। सर जीएस 4 में जो क्वेश्चंस आते हैं कोड बेस्ड वाले, तो उनको कैसे अप्रोच करें? क्योंकि मैंने देखा है विजन का जो मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह होती है प्रीवियस ईयर वाली, तो उसमें विजन में सॉल्व किया है, उसको पॉइंट वाइज सॉल्व कर दिया है। और जैसे दूसरा इनसाइट्स आईएएस का हो गया, जैसे इन सब का देखते हैं तो वो मतलब पूरा एक पैराग्राफ में उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको मतलब अटेम्प्ट कैसे करें? मतलब मान लीजिए जैसे कोई कोट आया तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता है। तो आपको कोड बेस्ड आंसर कैसे लिखना है, मतलब कोड के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे लिखना है, आप मुझे वो पूछ रहे हो? यस सर। तो नॉर्मली कोड बेस्ड आंसर को ना, क्वेश्चंस को हम ऐसे आंसर करते हैं ना, पहले हम कोड पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी XYZ कोड लिखा है, तो नॉर्मली हम जीएस के आंसर में कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ना। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन नहीं लिखते, यहाँ पे हम कोड को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कोट है आपका, टेट फॉर टैट कोट है, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि टेट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? टेट फॉर टैट मींस व्हाटएवर यू डू यू वुड गेट बैक। आप जो भी कोई आपके साथ करेगा आप उसके साथ वही करोगे। तो आप कोट इंट्रोडक्शन में कोट को एक्सप्लेन करते हो, तो आपने 5-7 लाइन में कोट एक्सप्लेन कर दिया। फिर आप बॉडी में क्या लिखते हो? आप बॉडी में फिर उसी कोड को अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स पे अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल टेट फॉर टैट आपने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे अप्लाई कर दिया, टेट फॉर टैट आपने कोई फूड सिक्योरिटी इशू के लिए अप्लाई कर दिया, टेट फॉर टैट आपने किसी और एस्पेक्ट के लिए अप्लाई कर दिया। तो आप 3-4 एग्जाम्पल्स देते हो कि टेट फॉर टैट कहाँ कहाँ यूज हुआ है और किन लीडर्स ने, किन वर्ल्ड इवेंट्स ने, किन फेमस लीडर्स ने उसे यूज किया है, उस कोड को अपने लाइफ में या अपने एक्शंस में यूज किया है। और फिर फाइनली कंक्लूजन में आप लिखते हो कि आपको वो कोड वो कितना रेलेवेंट है और आपको उस लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है आपकी उसकी। यस सर। सर एक क्वेश्चन जैसे केस स्टडीज में आता है, कुछ कुछ केस स्टडी में केवल 2 क्वेश्चन पूछे रहते हैं, एथिकल इश्यूज एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो उसमें मतलब कंटेंट की कमी हो जाती है, क्योंकि स्टेक होल्डर भी नहीं पूछता है और केवल 2 ही क्वेश्चन रहते हैं ए और बी पार्ट में, और पेज हम लोगों को 4 भरने रहते हैं। देखो केस स्टडी में स्टेक होल्डर वो पूछे ना पूछे लिखना ही होता है स्टेक होल्डर।
वो तो सर अनसेड है। मतलब जैसे छह केस स्टडीज हैं, तो छह के छह भी हम लोगों को लिखना है? केस, हाँ, लिखना ही लिखना होता है। शेयर होल्डर वो पूछे या ना पूछे, आपको लिखना ही लिखना है। मतलब पहले आपको, आपने केस स्टडी पढ़ी, तो नीचे आपको 4 लाइन में ये समझाना है कि एक्चुअली में केस स्टडी में हो क्या रहा है। मतलब वो एक समरी टाइप होता है, 4 लाइन का इंट्रोडक्शन, कि एक्चुअली में केस स्टडी में क्या हो रहा है। फिर नीचे आप लिखते हो स्टेक होल्डर्स कौन है इसमें। फिर उसके नीचे आप लिखते हो एथिकल डायलेमा या एथिकल इशू क्या है केस स्टडी में। ये 3-4 चीजें लिखना ही है, ये आपको पूछे ना पूछे, ये लिखना ही लिखना है, ये 3-4 चीजें। तो ये 3-4 चीजें लिखने में आपका 1.5 से 2 पेज भर जाता है। फिर आप पीछे जाते हो, फिर आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है। मान लो कोई केस स्टडी में ना क्वेश्चन में ही 4 पार्ट्स बना के दिए उन्होंने, तो फिर शेयर स्टेक होल्डर जो है उसको छोटा लिखो, या कुछ उसको एडजस्ट करो ताकि वो कम स्पेस ले, या उसका डायग्राम बनाओ, या फिर वो क्लाउड डायग्राम बनाओ उसका, ताकि वो स्पेस कम ले। लेकिन आपको इंट्रोडक्शन की केस स्टडी में क्या हो रहा है, जो एक छोटी सी समरी होती है, वो लिखना ही लिखना होता है। स्टेक होल्डर्स लिखना ही लिखना होता है। एथिकल डायलेमा लिखना ही लिखना होता है। वो पूछे या ना पूछे, आपको लिखना ही है। वो साइन क्यों नॉन होता है। सर इसमें जैसे आपने केस स्टडी में इंट्रोडक्शन के बारे में बोला है, तो जैसे मान हम्म। लीजिए एक मैं भी एक केस स्टडी पढ़ रहा था टेस्ट सीरीज का, तो उसमें था कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अनएथिकल प्रिंसिपल्स यूज कर रही है। तो हम्म। इसको हम लोग मतलब केस स्टडी से न लिंक करके इसको इंट्रोडक्शन उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो महात्मा गांधी के 7 सिंस था, वहां से स्टार्ट कर दें कि बिजनेस विदाउट एथिक्स हाँ, इज अ लिख सिन, सकते हो ऐसे तुम। लिख लेते हैं। हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो। मतलब यू कैन स्टार्ट की द above case study highlights the Gandhian sin of work without ethics, and the revolves around the Gandhian sin of work without ethics, in which a pharmaceutical company is involved in environmental degradation. हो गया इंट्रोडक्शन। यस। और सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मतलब कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी मतलब जीएस पेपर में जो मतलब क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़े ही नहीं है वैसा कुछ टाइप करके, जैसे मान लीजिए मैं नोट्स बनाया हूँ, तो उसमें मेरे किसी नोट्स में मतलब सोशल कैपिटल के बारे में लिखा ही था, लेकिन मैं जब पीवाईक्यू देखा तो एक क्वेश्चन ऐसा था, मतलब उसमें सोशल कैपिटल के बारे में ऐसा करके था। देखो, सोशल कैपिटल तो एक कंसेप्ट है जो तुमने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ा ही होना चाहिए। अगर वो नोट्स में नहीं है तो नोट्स इनएडुकेट है। नोट्स कहीं ना कहीं तो तुम्हें सोशल कैपिटल पढ़ा ही होना चाहिए। वो एक एनोनिमस टॉपिक नहीं है, वो पता होना चाहिए सोशल कैपिटल। सर मतलब वो तो टॉपिक हाँ। मतलब जैसे सोशल कैपिटल नाम है वो तो सुना है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही पूरा उसी पे आ जाए 10 मार्क्स का, तो वो मतलब हम्म। 2 पेज भरेंगे कैसे उसको? हाँ, अब वो सीन है कि हमें सोशल कैपिटल का तो पता है कि सोशल कैपिटल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रिलेशंस दैट आर प्रेजेंट इन अ सोसाइटी। हमें इतना ही पता है, 2 ही लाइन पता है, यही पढ़ा है। यस। तो अब क्वेश्चन किसी चीज, मतलब क्वेश्चन ने कुछ तो पूछा होगा ना कि व्हाट इज सोशल कैपिटल, and what are its यस सर। advantages, what are its disadvantages, it is degrading in the society। वो सिर्फ what is social capital पूछ के तो उसने छोड़ नहीं दिया होगा, उसने कुछ तो पूछा होगा उसके आगे पीछे भी। तो जो भी चीजें वो यस पूछता सर। है कि, जो भी चीजें वो पूछ रहा है कि व्हाट, समझो फॉर एग्जांपल व्हाट इज सोशल कैपिटल एंड इज इट डिग्रेडिंग इन द सोसाइटी इन द करंट एरा। तो इस पहले तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जीएस के क्वेश्चन में, क्वेश्चंस को पार्ट में तोड़ना। तुम अगर क्वेश्चंस को पार्ट में तोड़ लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा पेज भरना या लिखना कंटेंट। तो फॉर एग्जांपल सोशल यस सर। कैपिटल एंड इट्स डिग्रेडेशन, तो पहले तो यार ये बनाओ कि मेरे को सोशल कैपिटल लिखना है कि व्हाट इज सोशल कैपिटल। ठीक है। फिर उसके बाद इज इट डिग्रेडिंग इन द सोसाइटी। तो तुम्हें ये नहीं बताना कि वो डिग्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम्हें ये बताना है, तुम्हें अब क्वेश्चन को और 2 पार्ट्स में तोड़ना है कि येस इट इज डिग्रेडिंग, येस इट इज नॉट डिग्रेडिंग। तो एक्चुअली में इसी क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, व्हाट इज सोशल कैपिटल, इज इट डिग्रेडिंग इन द करंट सोसाइटी, व्हाट वी कैन डू टू एनहांस इट। तो पहले हमें लिखना है व्हाट इज सोशल कैपिटल। सेकंड स्टेज में हमें लिखना है कि इसमें 2 पार्ट्स है, या तो तुम इसको कॉलम बना लो या तो पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि इज इट डिग्रेडिंग। तो हाँ, ये डिग्रेड हो रहा है, तुम एक बार ओपिनियन बनाओगे कि ये डिग्रेड हो रहा है, तुम फिर एक बार ओपिनियन बनाओगे कि ये डिग्रेड नहीं हो रहा है। फिर तुम नीचे लिखोगे कि अच्छा अगर हम इसे सोसाइटी में और एनहांस कैसे कर सकते हैं। फिर फाइनली कंक्लूजन लिखोगे तुम।
कि कुछ भी कंक्लूजन जो भी तुम्हारा मॉडल होता है कि सोशल कैपिटल इज द पिनेकल ऑफ द सोसाइटी, सो हेंस वी नीड टू कंजर्व इट एंड इम्प्रूव इट, ऐसा या कुछ भी तुम जो भी सोचते हो. Yes, other can Sir, ask question. Yes. Yes, Apurva. yes, sir. Sir, I wanted to ask you, sir, regarding the service. Once you get into the service, I think only one attempt you get if you get into the forest service. You can reappear in the civil services just now, like if you have cleared it, then you can again appear for civil services. Is it so, sir, ki in the next attempt you are not allowed to give the attempt of the civil services if you are under training in the forest academy or even afterwards? See, there are rules with regards to आप appear कर सकते हो नहीं कर सकते हो. In recently in 2024 only, just before this, there is a government circular जो तुम्हें डिवॉइड करता है कि तुम appear नहीं कर सकते हो if you are in the academy. See, if you are in the academy, but if you put there are various leave type of leaves which can apply. One is like special leave. तो स्पेशल लीव में तुम अपना एफसी वाला पार्ट, मतलब जो लबासना जिसमें स्पेंड करते हो ना, उसको तुम फॉरगो कर देते हो कि मैं ये बाद में अटेंड करूंगा. एक लीव एक तरह ये होती है. एंड देयर इज अ वेरी स्पेशल लीव कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इन विच यू टेल द गवर्नमेंट कि मैं अभी नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करूंगा. तो यू आर ऑल टुगेदर द गवर्नमेंट कंसिडर्स कि आप नेक्स्ट ईयर पास हुए हो. तो वो एक साल के लिए आप क्या करते हो, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यू कैन अप्लाई दिस. But yes, once you join the academy, then you are not allowed to appear Yes. for the paper for 3 consecutive years. So, for example, if I join the academy in 2025 this year, so I'm not allowed to go in 2025, 2026, 2027. मैं ये 3 साल सिविल सर्विसेज का पेपर या इनफैक्ट कोई भी पेपर देश में नहीं लिख सकता हूँ. I would be eligible Yes. only in 2028 to write any paper in the country. Yes, sir. That is matlab debarring the person from ever writing this exam in the essence. हाँ, Mostly, but I you think. can decide prior ना. There are 4 months before you reach the academy. So in those 4 months decide क्या करना है. If you want to appear, go for extraordinary leave, तो or सेम you है can go for special FC. Sir, so are you planning to give or are you satisfied, sir, with forest services? Or are you At thinking the so? moment I also have to think कि क्या करना है मुझे. Sure, sir. Sure, sir. I understand, sir. Yes, Neera, Pushkar, if you have any doubt, we can ask. Otherwise, Pushkar H2O, Sun, 77. What's your approach about CSAT, sir? Like, are you good in that, or you have done something? See, I am from science background, so I had maths right from 10th standard itself. मतलब after 10th standard also I had maths. So 11th, 12th, and I am an engineering graduate. So I had maths for a very long period of time. But that does not mean कि at the current stage of the paper where the current difficulty of the paper I am comfortable with. बहुत हालत हो जाती है. If you people don't know, then I was one of the most luckiest guy in 2023 attempt in which it was my first forest interview. So in that attempt, I got 67.25 marks in CSAT. Oh, yes, sir. So I was that lucky कि I got 67.25 marks, which helped me to clear prelims. Then thereafter I was able to write mains and then go up till the interview. So that was a very big confidence booster for me. But I understood it. मतलब but 2023 का पेपर was extremely difficult CSAT का. Yes, sir. 2024 was a bit easier. 2025 का भी I have heard कि वो थोड़ा difficulty था. So ये एक चीज हो गई. Secondly, I would say कि यार CSAT के लिए prepare करो. मतलब sit down and prepare for CSAT. What I did was ना, I used to I study for prelims for like 2 months, or at least 2 months in whatever cycle I am. अगर मेरे पास 2 महीने हैं तो मैं 2 महीने प्रीलिम्स पढ़ता हूँ आज भी. So there was a video lecture series of study IQ. उस पे there is a sir called as
अंकित सर है, यस सर। उनकी पूरी सीसैट की सीरीज है, मैं वो पूरी सीरीज देख के उसमें से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के नोट्स बना लेता था और वो सम्स को बार बार देखता था। फॉर एग्जाम्पल उनका एक कंसेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट और सम ऑफ द रिमाइंडर्स, और रिमोट 3 नंबर को डिवाइड किया तो उसका क्या रिमाइंडर आएगा। तो मैं सारे सम्स को एक एक मतलब सारे कंसेप्ट को एक एक सम उसके लिख लेता था कि ये सम ऐसे सॉल्व होता है, ये सम ऐसे सॉल्व होता है, ये सम ऐसे सॉल्व होता है। एंड पूरे सीसैट में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, परसेंटेज कर लो, एवरेज कर लो, एंड देन यू हैव गॉट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो कर लो। एंड डू नॉट अंडर नो सर्कमस्टांसेस मेक दिस मिस्टेक टू रिलाई ऑन अ सिंगल, मतलब सिंगल मत रिलाई करना। मतलब अगर तुम्हारा इंग्लिश स्ट्रांग है, तुम्हें लग रहा है मैं सिर्फ इंग्लिश के बदौलत निकाल लूंगा, नहीं निकलेगा। तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग है, तुम्हें लग रहा है मैथ्स के दम पे निकाल लूंगा, नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन 2023 अटेम्प्ट आई थॉट मैथ्स के दम पे निकल जाएगा, बट इन मिड एग्जाम मुझे ये समझ में आया कि मैथ्स के दम पे नहीं निकलेगा, पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो आई शिफ्टेड टू इंग्लिश, मैंने इंग्लिश किया। इन 2024 अटेम्प्ट पता था कि कुछ भी प्री डिमांड, मतलब प्री दिमाग में डाल के नहीं जाना है हमने कि ये इसके दम पे निकालना है। सो जो भी आ रहा है इजीली वो करो। एंड सीसैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने आई आई वॉच वो स्टडी आईक्यू वाला पूरा सीरीज आई वॉच, एंड फिर अंकित सर वो बहुत सारी चीजें लाते रहते, रिविजन एंड टॉप कंसेप्ट रिविजन एंड सम्स प्रैक्टिस, वो सब कुछ लाते रहते, तो आई यूज्ड टू सॉल्व इट। Yes, sir. Yes, sir, sir. Even the comprehensions this time, sir. Uh, I mean, for me, sir, comprehensions I never used to see earlier, ever in my life. But this year, sir, comprehensions are the one which are stopping me from clearing CSAT because 10 See of my the comprehensions are wrong, sir. See, the I issue with CSAT is the CSAT one question carries 2.5 marks if you are correct. If you do it wrong, then it deducts 0.8 marks. So actually, it is 3 marks that you lose, 3.2, 3.33 marks that you lose. So if you do 3 questions wrong, na, you lose 10 marks. So it is never a sure, sir. very great margin. You would not fail by a very great margin. You would fail by maximum 4 5 questions, not more than that. 3 questions make 10 marks. 4 5 questions would make 15 marks. Sure, sir. So accuracy is the key in CSAT, and practice a lot, practice a lot. In my 2023 attempt, I practiced CSAT a lot. उसके बाद मैं 67.25 से पास हुआ. Yes, sir. Understand, sir. Sir, in 2023, I got 55 marks in CSAT, sir. I just gave after my engineering and I got 55 marks in that. Last year, I prepared for it somewhat. I got 85 marks. And this year, sir, I still, matlab, I knew number system and everything last year. I did it already. But this time, due to comprehensions, I solved about 51 questions in CSAT in total. But comprehensions that I thought ki would be right only, they went wrong. So I'm just 57.5 or some marks I am getting as per the answer keys, but still I'm just relying on the subjectivity as the people are saying of the comprehensions. That might make a difference. And that is an issue. The comprehensions answer everybody interprets upon itself, so it is a very difficult task. But I can tell you Hmm. something. Only few comprehensions are repeated every year. Yes, sir. So out of 80 questions, not more than 10 questions would be debated, and out of those 10 questions, the amount of number of questions that you would have did in which you are Yes, in sir. ambiguity would be around 2, 3, 4, not more than that. Sure, sir. So see whatever it is, and if you are getting 57, there is a professor called as Mudit Gupta. So he uploaded on his Telegram channel that if you are getting 57 or 60 marks, start studying. So I would also recommend you, if you are getting 57 and 60, start studying. There is no harm in studying, but there is harm if you clear and you are not studying. Yes, sir. Sir, right now, sir, the barrier is becoming of, sir, since you also had anthropology, that is becoming a bit of barrier. Ki, uh, to break the inertia from the, because in GS we have studied in prelims a lot, but still anthropology is lagging behind, sir. So
Anything that you would like to say for that, sir? Yeah, the best thing to break this inertia is na to buy a test series. Buy a Yes, test sir. series and then sit on the test series. And when you are not able to complete the test series and your money goes in vain, you would understand. Matlab, the pressure of it is very high. So I will tell you, if you are not able to break the inertia, whatever test series you would take, for example, if I name, there is a class called as L2A, buy test series, see क्या schedule है. For example, वो Sunday test लेते, so you would know कि ये Sunday ये test आ रहा है, you have to write the test and like religiously follow the schedule. So if you are religiously following that schedule, it would structure your पूरा preparation and then you would have the you would know कि यार इतने टाइम में मुझे ये पढ़ना है, तो you would start studying. Sure, sir. Sir, and in anthropology, sir, I wanted to ask, sir, in the subject, sir, should we do the first the basic structure like the people who have to be mentioned compulsorily in the particular topic? For example, Sanskritization, you have to mention about MS Srinivasan compulsorily for that. So, sir, should I do that first and then do the value addition, or should I take the topic and do the value addition hand by hand only? Matlab, just uh, in the process itself. कि one topic See, complete what both of them goes together. And for example, normally we say that normally we say कि your anthropology has to be completed yes, before sir. the prelims. So now the amount of value addition is very less. You have to, matlab, the amount of reading is less. You have to only value add. So Sure, sir. and value addition, what does value addition mean? For example, you had been talking about Sanskritization. So you read Sanskritization, you read everything about Sanskritization. Now you have a content of 200, 300, 400, 500 words of content you have on Sanskritization. But Yes, you find an example, for example, any X tribe in Madhya Pradesh is now showing Sanskritization in a very different manner as compared to the manner that M.N. Srinivas has predicted. So these yes, two lines are value addition. These two lines would not take much of the time to add into your notes. yes, sir. And sir, did you make your own notes for anthropology? What did you follow, sir, for anthro, sir? Yeah, for anthro, there is a topper called as Laghima Tiwari. AR 19 years Yes, of sir. Her notes I have, 20. sir. Huh. Yes, 21 so notes. I Yes, sir. read. So I previously used to read Akshar Jain plus my notes, and then thereafter I figured it out that 80% of our content is Akshar Jain, and the rest of Hmm. the value addition she has did. So I thought, ki yaar, let's lower down our effort, and if I'm able to read the entire notes of Laghima, I'd be able to get good marks. So I started reading her notes. Yes, sir. And you value added in that only, yes, sir. Even Yes, I yes. doing the same. So I made Laghima's note as my base notes and then started adding value to it. Matlab value addition I did to it. Sure, sir. Sir, have you seen some of the materials like Sunya IAS material, the books which are getting very popular? Or No, you I stick haven't. with I that? would not. No, no, I wouldn't be able to comment it. I have not seen it, so I would not either say they are good or bad. You can do for it yourself. Sure, sir. Thanks. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Yes, if anybody have any doubt, we can ask. Otherwise, we'll. Yes, sure, please, son. S2, उसका मेरा. Anybody wants to ask question, कोई फुद्दू सा डाउट है तो भी पूछ लो. There was nobody to tell me कि ये प्रॉब्लम है. I want to ask this. I was very shy and nobody was around me. तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो. There is no problem in that. गुड इवनिंग सर. सर Go ahead. पेपर थ्री को लेकर डाउट है सर. लाइक कुछ पोर्शंस को स्किप GS3. कर दूं या फिर जी जी. क्वेश्चन स्किप्स तो नहीं, मतलब यू कैन नॉट स्किप एनी क्वेश्चंस. क्वेश्चन क्या ही स्किप करेंगे? 20 के 20 क्वेश्चन तो लिखना ही है मेंस में. सर पोर्शन की बात कर रहा था. लाइक कुछ मतलब इंटरनल वाले में भी थोड़ा लाइक
और लाइक टॉपिक स्पेसिफिक वैसा कुछ कर लूँ क्या, क्योंकि बहुत लेंदी लग रहा है सर वो GS3 वाला पार्ट। GS3 लेंदी है, मतलब लग नहीं रहा है वो लेंदी है, इट इज इनहेरेंटली लेंदी, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप कुछ स्किप ही करके चले जाओ, बिकॉज एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए सबका कि अगर कुछ भी आए तो कुछ तो लिख पाए। जी सर सर GS3 के अंदर since it has been a trend कि people are getting comparatively less marks in GS3 around 80 90, even the toppers are getting this much marks. So sir, I wanted to ask कि मतलब how much emphasis should we give, because even sir Abhishek sir was, although he's not here, he gets very good marks in GS3 as he was telling. So sir, what would you tell sir about this, कि how to increase your marks in GS3 is. See, every GS has to be given due importance as it deserves, and it should be given importance as compared to all the other GS that you are reading. So, amount of time that you put in GS1, GS2, GS3 ideally should be equal, but they are not equal in everybody's case, क्योंकि सबको पता होता है कि मेरा यहाँ पे strong point है, and then you understand कि this is my limit in this GS, इससे ज्यादा मेरे को पढ़ने में cost benefit कम है. So if I'm able to reproduce this much, that is more than enough for me in this part of GS. But if I do extra effort, for example, in GS4, I would be able to get few more marks in GS4. So you need to do adequate amount of Yes sir. hard work in all the GS, plus some extra effort in GS that you see are your strengths, or the GS that you see are your weakness. Yes sir, understood sir. Yes, anybody have any doubt? Any question regarding anything? कुछ भी है पूछ लो regarding prelims. सर एक वो भी केस स्टडीज को भी लेके था कि लाइक उसमें एग्जांपल वगैरह कितना लाइक पुट करना है, लाइक एनिसेंट मॉडर्न क्या। नॉर्मली पूरे GS4 में ऐसे एग्जाम्पल्स लिखो जो कंटेम्प्रेरी है, जो अभी अभी हुए हैं, और जितने एग्जाम्पल्स रीसेंट होते हैं उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का दांडी मार्च इज वेरी ओल्ड, मतलब तब से लेके आज तक देश में कुछ तो हुआ होगा नया जो उस एग्जाम्पल को रिप्लेस कर सके. उसके इंपॉर्टेंस को नहीं रिप्लेस कर सकता, लेकिन एग्जाम्पल को तो रिप्लेस कर ही सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास what do you there's a guy called तुकाराम मुंडे, एक IAS ऑफिसर है, महाराष्ट्र कैडर में ही है. उन्होंने उनको हम ऑनेस्टी के लिए, मतलब उनका एग्जांपल हम ऑनेस्टी के लिए कोट करते हैं, बट क्या और एग्जांपल्स नहीं हुए ऑनेस्टी के अभी रिसेंटली में? कोई ना कोई तो तुम्हें एग्जांपल मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल हर साल है ना, इंडियन एक्सप्रेस है ना, वो एक्सेलेंस अवार्ड निकालता है हर साल, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह को दिए जाते हैं एक्सेलेंस अवार्ड. वो कुछ 15-20 10 से 12 कैटेगरीज होती है जिसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं. तुमने वो कैटेगरीज में कौन अवार्ड जीत रहा है ना, अगर वो वाले भी नए एग्जाम्पल्स ढूंढ लिए ना, तो भी तुम्हारे पास 10 से 15 एग्जाम्पल हो जाते हैं, और एक एग्जाम्पल को तुम दो तीन जगह पे एक्स्ट्रा सेट कर सकते हो. ओवरऑल कोई भी 30 से 40 एग्जाम्पल याद करता है पूरे जीएस, पूरे जीएस, पूरे एथिक्स के लिए. 30 से 40 एग्जाम्पल आर मोर देन इनफ टू कंप्लीट योर एंटायर पूरा प्रिपरेशन. तो फाइंड दोस 40 कंटेम्प्रेरी एंड न्यूअर एग्जाम्पल्स, और जो हमारे पास ट्रेडिशनल है वो तो है ही. तो सर लाइक उसका डोमेन सर अलग अलग रखना जरूरी है क्या सर? लाइक मतलब लाइक रिलीजन वाले पार्ट में है तो इस्लाम, हिंदुइज्म ऐसे करके लाइक डिवीजन होना जरूरी है, या फिर जो आ रहा है वो? देखो, नॉर्मली हम डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि हमारे आंसर्स भी वैसे दिखने चाहिए ना, जैसे हम है मल्टी कॉम्पोजिट, डाइवर्स, मल्टीलैटरल, सेक्युलर. मतलब तुम्हारे एग्जाम्पल्स से भी तुम्हें जज किया जा सकता है ना. फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई एक्स रिलीजन को बिलोंग करते हो और तुमने पूरे पेपर में एक्स रिलीजन के ही एग्जाम्पल्स लिखे,
वो पेपर जो चेकर है उसको भी समझ में आ रहा है ना कि मतलब ये इज लाइक अ वेरी सिंगुलर रिलीजियस गाय, वो सेक्युलर बंदा नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई में बौद्धा लिख दिया, कोई में महावीर लिख दिया, कोई में इस्लाम का एग्जाम्पल लिख दिया, किसी में हिंदुइज्म का एग्जाम्पल लिख दिया, किसी में बहाइज्म का एग्जाम्पल लिख दिया, तो इट शोज मल्टीलैटरलिज्म। और उस इट शोज कि तुम्हारा जो पूरा एंटायर थिंकिंग है वो तुम्हारी काफी वाइड है, तुम जानते हो चीजों को, दुनिया में तुमने कुछ देख रखा है। यस सर। ऐसा ऐसा करने पे से टाइम ज़्यादा लग जाता है, लाइक स्पेस भी चला जाता है, टाइम भी चला जाता है, बट वो बहुत बार होता है ना, फ्लो में लिख देने के बाद पता चलता है कि ये इसमें ये कुछ भी किया जा सकता था, बाद में रियलाइज होता है फिर, मतलब फ्लो देर फ्लो इज में तो ऑलवेज इजी अ हो जाता है फाइट, ये। देर इज ऑलवेज अ फाइट कि टाइम वर्सेस क्वालिटी की फाइट हमेशा होती है, कि या तो टाइम ज्यादा लग रहा है या तो क्वालिटी ज्यादा लग रहा है। जब वो चीज बैलेंस हो जाती है तभी टॉपर बनता है कोई भी। मतलब पास तभी होंगे जब वो चीज बैलेंस हो जाएगी, कि हाँ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम में एडिक्वेट क्वालिटी लिख के आए हैं। जी, थैंक यू सर। सबका हो गया है क्या? और किसी का कोई डाउट है? क्लास डाउट है सर, वो कंपलसरी पेपर को लेके सर, क्या लाइक उसको सीरियसली, उसका कुछ सोर्स वोर्स या किस तरीके से उसको करना कंपलसरी पेपर? और मेंस के कंपलसरी मतलब इंग्लिश और जो मैंने हिंदी लिया था, तो इंग्लिश और हिंदी तुम कह रहे हो? जी जी जी। वो मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, तुमने लास्ट के 5 साल के पेपर पढ़ भी लिए तो इट इज मोर देन, इतना कोई स्ट्रेसफुल नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा एक पेपर इंग्लिश और एक पेपर हिंदी है, तो तुमने सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन वगैरह तो इंग्लिश में पढ़े ही होंगे, या मतलब उतनी इंग्लिश तुम्हें आ जाएगी कि तुम वहां लिख दोगे। और वो इजी भी बहुत होता है वो, क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है तो वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, वो इजी होता है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश आपके लिए इजी होगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी इजी होगा। नेक्स्ट दूसरा वाला पेपर है उसको मैनेज कर लो थोड़ा सा, और मार्क्स मिल जाते हैं उसमें, बहुत कम ही लोग फेल होते हैं। लास्ट 5 साल के पेपर पढ़ लो और देखो क्या रिपीट हो रहा है, उस हिसाब से पढ़ लोगी तो हो जाएगा। मार्केट में बुक भी आती है जिसमें 5 साल का, 5 से 10 साल का, लास्ट 5 से 10 साल का सोल्यूशन होता है। अगर नहीं हो पा रहा है वो बुक में से लास्ट 10 साल के सोल्यूशन पढ़ लो तो भी हो जाता है। थैंक यू सर। सर फॉरेस्ट में भी सर ये होता है क्या, मतलब कंपलसरी? नहीं, नहीं। फॉरेस्ट में सिर्फ 6 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश, एक जीएस, 4 ऑप्शनल, 6 के 6 मेरिट होते हैं। यस सर। सो आई थिंक सबका डाउट इज क्लियर। अगर तुम्हें इसके बाद भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो यू कैन टेक्स्ट मी। पर्सनली भी तुम टेक्स्ट कर सकते हो, ग्रुप पे भी टेक्स्ट ड्रॉप कर दोगे तो भी मैं रिप्लाई कर दूंगा, मुझे पर्सनली टेक्स्ट ड्रॉप कर दोगे तो भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपको कभी भी कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। यस सर, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन सर, वेरी ग्रेटफुल सर। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मच। दीपक। सो मच। सर आपको पर्सनली अगर मान लीजिए मैसेज करना हो तो कैसे करेंगे? सर ड्रॉप कर देंगे कोई ना कोई तरीका, आप वहां से मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब टेलीग्राम पे ही कोई वो मेरी आईडी ड्रॉप कर देंगे, आप वहां टेक्स्ट कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, Deepak, for coming here. It was a wonderful session that we discussed here. I think सबको थैंक यू हेल्पफुल सर। हो ही गया होगा। Hey, if you people don't know, he was my college mate. मतलब we used to go college together. He and Abhishek, both of them. Well, we three यस all सर। were like college mates. यस सर, श्योर सर।
सर पिछले साल भी आप भी सर क्लास में कभी आ जाते थे और एंड वी यूज टू डिस्कस एज वेल इन द लास्ट ईयर सेशन ऑल्सो। अच्छा, हाँ वो शायद मजाक मस्ती हमने की होगी कुछ, बट सो हाँ सर। सीरियस। ठीक है, चलो, आई विल टेक योर लीव नाउ। इट वाज गुड थैंक यू इंटरेक्टिंग। दीपक। चलिए, I'm audible? Yes, sir, you're audible, sir.